This is second part of anatomy of flowering plant. First question: the cork cambium, cork, and secondary cortex are collectively called as. So यहाँ एनसीईआरटी में देख सकते हैं फेलोजेन मीन्स कॉर्क कैम्बियम, फेलेम means cork, and secondary cortex means phyloderm is collectively called as periderm. So option 3. Next, function of companion cells is. सो यहाँ एक कंपेनियन सेल है, उसका काम होता है, और ये सिव एलिमेंट है, सिव ट्यूब एलिमेंट है, उसका काम होता है लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सिव एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन: हर्टवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड इज. हर्टवुड में क्या होता है, जो हर्टवुड डेड डेड होता है और उसमें डज नॉट कंडक्ट वाटर, सो हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट. एंड सैपवुड में कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, फेलोजन होता है, इंटरकैलरी मसल नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन: द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स. सो जो ट्रकिड्स होते हैं, वो ट्रकिड्स आर elongated और ट्यूब लाइक सेल्स with thick lignified cells, and in flowering plants tracheids and vessels are main water transporting elements. So flowering plant में tracheids होते हैं, वो water conducting होते हैं. Next, transport of food material in higher plants take place through sieve elements. Next, in barley stem vascular bundles are. In barley is monocot होता है, monocot. So closed and scattered ये होता है मोनोकॉट में. नेक्स्ट, पेलिसेड पेरेंकाइमा is absent in leaves of sorghum. Next, and the annular ring are spirally thick and conducting element generally develop in the protoxylem when the root or stem is differentiating. Next, anatomically fairly old dicotyledon's root is distinguished from the dicotyledon stem by position of protoxylem. Next, the length of different internode in culm of sugarcane is variable because. Okay, so ये इंटरनोड होता है, ये इंटरनोड होता है, मतलब यहाँ का इंटरनोड. सो यहाँ इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है. So the length of different internodes in kernel of sugarcane is variable because intercalary meristem. Next, a common structural features of vessel element and sieve tube elements are in nucleated condition. वहाँ nucleus नहीं होता, nucleus absent. Next, in woody dicotyledons trees. In woody dicotyledonous tree, which of the following parts will mainly consist of primary tissue? So all part नहीं है, stem और root तो नहीं, जो fruit, flowers, fruit and leaves है वो primary tissue है. So option 3. Next,
Which of the following statement is true? Vessels are multicellular with wide lumen. Yes, ये बराबर है. Tracheids are multicellular with narrow lumen. No, wide lumen होता है. Vessels are unicellular with narrow lumen. No. Tracheids are unicellular with wide lumen. No. Tracheids होता है unicellular होता है. Tracheids unicellular. Vessels होते हैं वो multicellular होते हैं. और यहाँ वाइड लुमेन होता है. ये tracheids are unicellular. No, the tracheids are unicellular with wide lumen. So our answer is option 1. Next, axillary bud and terminal bud derived from the activity of. Axillary bud होता है वो ऊपर में होता है, तो apical meristem. Apical meristem is present at tip of root. Tip of root. They part in initial growth. So ये ऊपर present होता है. Next, vessels are found in. Vessels are tube-like structures ideally suited for the conduction of water and solutes. They are made up of a row of cylindrical cells arranged in longitudinal series. So ये most of angiosperms में present होता है और few gymnosperms में present होता है. So our answer is second. Next, which of the following simple tissues are commonly found in fruits, walls of nuts and pulp? जो sclerites होता है are spherical, oval और cylindrical highly thickened dead cells with very narrow lumen. So ये present होता है commonly found in fruit walls of nuts, pulp of like guava, pear. So यहाँ pear दिया है, so sclerites present होता है. Next, which of the following helps in maintenance of the pressure gradient in sieve tubes? So जो the companion cells help in maintaining pressure gradient in sieve tubes. So companion cells. Yeah, yeah. In the given figure, which component has outer walls and highly thickened inner walls? So जो ये guard cells है, guard cells, उसके thickened inner walls होते हैं. So guard cells. Next question. The transverse section of plant part showed polyarch radial and exarch xylem with endodermis and pericycle. The plant part is identified. So radial दिया है. ये जो radial दिया है, radial xylem. So radial होता है वो monocot root में present होता है. So monocot root. The arrangement of is called as radial suction roots in monocot root. Next. Interfascicular cambium is present between two vascular bundles. Next. The type of tissue commonly found in fruit of wall of nut. हमने पहले ही देखा है. जो sclerates होता है वो कहाँ present होता है? Pulp of fruits like guava and pear. So sclerate.
Next, initiation of lateral roots and vascular cambium during secondary growth takes place of pericycle. Next, the anatomy of springwood shows some particular features. Identify correct set of statements about spring. So springwood है उसको ये early wood कहते हैं. So ये बराबर है. In springwood season, cambium produce xylem elements with narrow vessels. ये देखो, yeah, dissecting forms xylem elements have narrow vessels. So ये भी बराबर है. It is lighter in color. Yes, it is lighter in color. नहीं नहीं, ये सेकंड है वो रॉन्ग है. यहाँ क्या दिया है? इन स्प्रिंग सीजन कैम्पियम प्रोड्यूस xylem element with narrow vessels. यहाँ क्या यह है? Xylem elements having vessels with wider cavities. So option 2 is correct. It is lighter in color. Yes, it is lighter in color. The spring wood along with autumn wood shows alternate concentric rings forming annual rings. Yes, या अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक के रिंग्स होते हैं उसको एनुअल रिंग बोलते हैं. सो ये बराबर है. इट हैज लोअर डेंसिटी. यस, इट हैज लोअर डेंसिटी. नेक्स्ट, cells with active division capacity is called as meristemic tissue. Tissue having all cells similar in structure and function is called simple tissue. Tissue having different types of cells is called as vascular tissue. Dead cells with highly thickened wall of nut हमने देखा है स्क्लेरेट्स में प्रेजेंट होता है. So A, 2, B, 4, C, 1 and D, 3. नेक्स्ट, हमने देखा है लेंटिकल्स इज क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और जो कॉर्कैम्बियम है उसको ही बोलते हैं फेलोजन. सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडम बोलते हैं उसको. और कॉर्क और कॉर्कैम्बियम उसको सुबेरियन डिपोजिशन होता है. सो A 3, B 1, C 4 and D